this is? Yes. तो कल हमने किया था ऑर्थोनॉर्मल सेट. आज हम बात करेंगे कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट की, और जिसको हम कभी-कभी कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. कभी-कभी नहीं, बहुत बार कहते हैं. तो लेट्स गेट व्हाट इज अ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट. So complete orthonormal set. An orthonormal set EI is in a Hilbert space H cross is said to be complete if it is maximal it is maximal in the partially ordered set, in the partially ordered set of all orthonormal sets in H with respect to set inclusion. By that I mean, अगर मेरे पास एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है, B है, C है, बहुत सारे ऑर्थोनॉर्मल सेट्स हैं H में, अगर मैं ये सब का सेट लूं, A, B, C, इनमें जो सबसे बड़ा होगा वो होगा कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट. ठीक है. समटाइम्स वी कॉल इट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी कहते हैं इसको. वो इस वजह से एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट हमने देखा था इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो दिस वुड बी द बिगेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. और बिगेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट वुड बी बेसिकली बेसिस. सो बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हम इसको बेसिस नहीं कहते. उसकी कुछ वजह है, मैं बताऊंगा. क्योंकि बेसिस में एक कंडीशन होती है, we should be able to write any vector as a finite linear combination. वो यहाँ पे नहीं, you know, of the elements of the basis. तो वो यहाँ पे चूंकि नहीं है, इसलिए उसको बेस नहीं कुछ कहते भी है, but then we understand that इसका मतलब वो वाली basis नहीं, ML basis नहीं, orthonormal basis is not vector basis or ML basis. So ये भी हम प्रूव कर सकते हैं कि it exists, यानी सबसे बड़ा कोई ना कोई जरूर होगा. तो let's do it a small theorem. वो ये है कि every non-zero Hilbert space, यानी जिसमें जीरो के अगर कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट है, contains a complete, always contains largest या complete orthonormal set. Proof इसका है, now let H be non-zero, यानी let it not be just a singleton zero, then it must contain a non-zero vector. Obviously, so let E be equal to x by x, then trivially this E is clearly a scalar multiple of x, and x belongs to H, and x is a vector space, H is a vector space. So this is a subset of H.
and it is orthonormal because इसका length 1 हो, so it is trivially an orthonormal set in H. Let this fancy F be the class of all orthonormal sets in H partially ordered with respect to set inclusion. With respect to set inclusion. Set inclusion का मतलब चलो ये सिंबल, मेरे कहने का मतलब है ये जो हम इसमें एक ऑर्डर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फाइल में, वो क्या कि a is less than equal to b is the same as a is a subset of b. ये partial ordering है automatically इस H पे, so it's a partially ordered set. Now let C be any chain, हम यहाँ पे Zorn's lemma यूज करेंगे. अगर इसकी कोई भी chain हो in this partially ordered set, हम बहुत बार ऐसा argument करेंगे, then U equal to all union of all E belonging to, U मैं नहीं करूँगा, मैं कुछ और नाम दूंगा, मैं क्या करूँ, upper bound equal to estimate, मैं कुछ और नाम दूंगा, चलो A भी अच्छा नहीं होता, चलो मैं इरेज कर दूंगा इसको, मैं देता हूँ एक फैंसी U, मतलब लेस U be equal to union of all E such that E belongs to this C. So मैंने इन सब का यूनियन लिया, it is an upper bound of C. अब obviously upper bound तो होगा, the question is क्या union of orthonormal sets in a chain would be an orthonormal set. That's obvious because chain होता है linearly ordered, तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला आएगा that would be the union. If A is subset of B is subset of so on and so forth, तो इसका जो यूनियन होगा वो यहाँ जो सबसे बड़ा वाला होगा, which would be automatically an orthonormal set. So this is an orthonormal set and this is an upper bound of our chain. So that every chain या linearly ordered subset C in this I has an upper bound. Hence by Zorn's lemma, जो हम इससे पहले कर चुके हैं हान-बानक थ्योरम के टाइम, contains a maximal element, और वही होगा अपना complete orthonormal set. ऐसे ये उतना important नहीं है, this existence thing, but nevertheless we want to be sure that it does exist. Regarding these complete orthonormal sets, there is an important theorem. So let H be a Hilbert space and let EI be an orthonormal set. Then the following are equivalent. Okay. पहला EI is complete. अगर EI complete है, so it is equivalent to this second property that X अगर सभी EI के साथ orthogonal है, this would imply that X is equal to 0. Third, यहाँ लिखता हूँ मैं. Third, this is equivalent to if X is an arbitrary vector
in H, then X can be realized as X is this. मतलब पहले तो ये कि ये कन्वर्ज करेगी, दूसरा ये कि X, any X can be written like this. इसको हम बोलते हैं इस सम को फूरिये एक्सपेंशन। उसकी लंबी कहानी है फूरिये एक्सपेंशन की। इसको हम बोलते हैं फूरिये एक्सपेंशन ऑफ X, जब हम X को ऐसे लिख सके। और ऐसा हम तब कर सकते हैं if EI is a complete orthonormal set and vice versa. अगर हम ऐसा हर एक वेक्टर के लिए लिख सकते हैं, then EI must be a complete orthonormal set. Fourth, if X is an arbitrary vector in H, then the norm of X square can be written as summation moduli of XEI का square. और तुम्हें याद होगा बेसिकली इसको हम बोलते हैं पार्सेवल्स आइडेंटिटी। पहले मैं लिख देता हूँ पार्सेवल्स आइडेंटिटी। तो हमें पता है कि नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो एक्चुअली हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है फॉर एनी ऑर्थोनॉर्मल सेट। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर ये कंप्लीट होगा, मतलब खाली ऑर्थोनॉर्मल नहीं, सबसे बड़ा ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा, देन ये ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह इक्वालिटी आ जाएगी। और वाइस वर्सा, अगर ये इक्वालिटी आ जाती है फॉर एनी एवरी एक्स, देन EI मस्ट बी कंप्लीट। तो प्रूफ इसका उतना मुश्किल नहीं है। We show that 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 4 and 4 implies 1. तो उसका मतलब ये सारे के सारे बराबर है। अगर इससे ये निकलता है, इससे ये, यहाँ से ये निकलता है, यहाँ से और यहाँ से ये, तो ये सर्कल पूरा हो जाएगा। That means all the statements are the same thing. They are equivalent. तो हम इनमें से कोई भी कैरेक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं फॉर कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। हम ज्यादातर ये करते हैं, ये भी करते हैं, ये दो सेकंड एंड थर्ड। जैसे तुमने किया होगा, हमने 4 कंडीशंस की थी व्हेन अ लीनियर ऑपरेटर इज कंटीन्यूअस, पर उनमें से एक दो थे हम जो ज्यादा यूज करते हैं, यानी वो कंडीशंस व्हिच आर द सेम, व्हिच वुड इंप्लाई एंड वुड बी इंप्लाइड बाय दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, यानी उस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है। तो इसी तरह से ये चारों इक्विवेलेंट है, तो हम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं फॉर द डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। प्रूफ ए कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, सॉरी प्रूफ। पहले हम करेंगे 1 implies 2, यानी अगर ये कंप्लीट है तो ये होगा। और सपोज 1 holds, ओके, assume to the contrary कि 2 सच नहीं है, हम दिखाना चाहे 2 भी सच होगा। assume to the contrary 2 is not true, तो उसका मतलब क्या है, हमारे पास एक वेक्टर है जो सभी EIs को ऑर्थोगोनल है और वो नॉन जीरो है, राइट? So therefore there exists 0 not equal to X belonging to H such that X is orthogonal to every EI, right? X is orthogonal to every EI. We define, because it is non-zero, we define E to be X by norm X. This clearly belongs to H. And clearly EI is equal to X by norm X EI, which would be X into scalar बाहर आएगा, that's equal to 0 for all EI. Why? Because we are assuming first ये कहता है X is orthogonal to whole set of EI. What does that mean? And of course norm of E is equal to 1. Therefore if I take this set EI, सभी का नॉर्म 1 है और सभी आपस में ऑर्थोगोनल है। EI तो थे ही आपस में, लेकिन E भी हर एक EI के साथ ऑर्थोगोनल है। So what does that mean? It means is a orthonormal set bigger, which is bigger than EI. So that violates first.
which is a contradiction. To 1, hence 2 must be true. So therefore 1 implies 2. Now 2 implies 3. 2 implies 3 में क्या है, हम ये मान के चल रहे हैं कि x is orthogonal to every EI implies that x is equal to 0, right? Then हमें दिखाना है कि x can be written as this. ये ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि हम पहले ही इससे पहले कुछ कर चुके हैं. Now we know that ये हम कर चुके हैं. x minus summation x EI is orthogonal to EI. It's orthogonal to every EI. हम कर चुके हैं ये theorem से पहले. Therefore by 2, अगर 2 true है जो कि हम मान रहे हैं, x minus summation x EI must be the 0 vector, which implies nothing but x must be summation x EI. Easy. So 2 implies 3 is very easy. How about 3 implies 4? Very easy. 3 implies 4. 3 क्या कहता है? Every x can be written as this Fourier expansion. Now suppose, suppose 3 is true. 3 is true का मतलब every x belonging to H, we can write x as summation this thing. Okay. Now then, suppose this is true, it means that norm of x square can be written as inner product. चलो मैं पहले लिखता हूँ inner product x which is equal to x को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की वजह से. So that would be summation x EI summation x EI. That would be summation बाहर x EI बाहर. अब मैं डायरेक्टली लिखूँ क्योंकि मैं बहुत बार कर चुके हैं. x EI का बार बाहर और यहाँ summation और अंदर बचेगा EI EJ. EI ही होगा. So this would be 1. हमने बहुत बार ये कर चुके हैं. This is just equal to summation x. चलो मैं यहाँ लिखता हूँ EJ, तो बेटर वो है. जस्ट कि ये डिफरेंट है, मिक्स ना हो जाए. अब हमें पता है ये एक ही जगह 1 होगा, बाकी हर जगह क्या बोलते हैं इसको 0 होगा, बिकॉज इट्स एन ऑर्थोनॉर्मल सेट. सो ये बन जाएगा दिस थिंग व्हिच इज इक्वल टू. ओके, तो ये हो गया 3 implies 4. अब लास्ट वाला है कि 4 implies 1. Now suppose that norm x square is equal to mod of this x EI in a product square for all x belonging to H. We have to show that then EI is complete orthonormal set. Now assume to the contrary. EI is not complete. So then there exists an orthonormal set bigger than EI in H. Say हम इसके साथ एक और जोड़ देते हैं EIE, राइट? तो इससे बड़ा होगा. तो अगर ये कंप्लीट नहीं है, but then norm of E square, क्योंकि हर एक x जो H का होगा E भी H में ही belong करेगा. It can be written as summation mod of EEI का square. ये कॉमा है यहाँ पे, but which is equal to 0. But this is equal to 1.
क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल है, इसकी लेंथ 1 होगी। लेकिन चूंकि ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है ई ई आई, इसका मतलब दे आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, यानी ई ई आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। तो अगर ये 0 है लेकिन इसकी लेंथ 1 होनी चाहिए, विच इज एब्सर्ड। Therefore, what do we have? AI is complete. तो हमने दिखाया ये चारों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं थी प्रूव करनी। Basically, now we come to some orthonormal sequences which are important. So, जो ना फूरिये ने काम किया था उसी की तरफ हम जाएंगे। So let me take some an important orthonormal sequences. इसमें से हम लेंगे जो कि बेसिकली जहाँ से ये सब आया है। If I take L2s, the big L2 functions, L2 0 to pi, yani basically this is all f functions from the interval 0 to pi to, of course, the scalar field K, such that, of course, f is measurable and integral norm ft dt over the set. I think I should write थोड़ा सा मैं यहाँ d mu लिखता हूँ, because we are talking about Lebesgue integrals. इसका जो स्क्वायर है ये लेस देन इन्फिनिटी है, यानी these are square integrable functions, जिस तरह से स्क्वायर summable sequences होती है। ओके, और इसमें of course we know this is an inner product space. इसका जो inner product है वो डिफाइन होता है fg is equal to, यहाँ मैं नीचे सेट लिख सकता हूँ 2 पाई, क्योंकि 0 to 2 पाई हम यूजुअली लिखते हैं what you call ft gt prime d, वो हम यूजुअली लिखते हैं किसके लिए, रीमन इंटीग्रल, सो दैट जो इंड्यूस्ड नॉर्म है, नॉर्म ऑफ f, उसको हम कभी 2 लिखते हैं, इट विल बी इंटीग्रल, नो दैट स्क्वायर जो है वो होगा f, वो होगा जो भी, वैसे हम फिर ये सेट भी नहीं लिखते नीचे, क्योंकि इट इज अंडरस्टूड f of t into f of t bar dt d mu लिखता हूँ मैं, वैसे लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि ये लेबेग इंटीग्रल है, और सर भी मॉड ऑफ एफ टी स्क्वायर डी म्यू, यानी इसका जो इंटीग्रल होगा नॉर्म ऑफ एफ का टू, इट इज सिंपली इंटीग्रल, इट इज अंडरस्टूड किस सेट पे है, यूजुअली फिर हम नहीं लिखते, वो कॉन्टेक्स्ट से क्लियर है। Now this is the norm and that is the inner product, so it's an inner product space. तो इसमें एक ये जो हमने लिया L2 0 to pi, इसमें एक ऑटोमेटिक ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है, so that is I think e raised to power, अगर मैं लेता हूँ en को e raised to power, कैसे मैंने, so let me take it e raised to power I n x divided by root of 2 pi. So this sequence where n runs from 0 भी हो सकता है, plus minus 1 plus minus 2, this is an orthonormal sequence in big L2. लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें दिखाना है कि इसका नॉर्म जो हमें नॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे 1 है, और इसका जो इनर प्रोडक्ट है विद, अगर n डिफरेंट है तो वो 0 होगा। तो बेसिकली ये क्या होगा, दिस इज, अगर मैं इसको n को वैल्यू दूं तो दिस सीक्वेंस विल बिकम
ये 0 आ गया तो एक तो आएगा 1/√2π, 1 आएगा तो e raised power iota x divided by √π 2π, and you have e raised power minus iota x divided by √2π, and I have, what do I have? लेकिन एक अभी मुझे इस √2π के बारे में आइडिया नहीं है, मतलब हाँ मुझे लगता है ठीक है, लेकिन शायद हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन वॉट एवर वो हम करेंगे। 2ix डिवाइडेड बाय √2π, मतलब इस टाइप की फंक्शंस जो हैं which are Lebesgue integrable because they are continuous and they are Riemann integrable, so therefore if they are Lebesgue integrable and their Lebesgue integral is equal to their Riemann integral। मेरे कहने का मतलब है अगर मैं इनका Lebesgue इंटीग्रल देखूं 0 to π, मेरी जो en फंक्शंस हैं, राइट, whatever the mu, it is the same thing as what do you call it? I think I should write it at en at x, ठीक है, x लेते हैं या t लेते हैं, चलो t लेते हैं, चलो मैंने x लिख दिया, doesn't matter, it's a dummy variable in any case, so they are functions, so that would be just dt, and it's because they are Lebesgue integrable, Riemann integrable, so if a function is Riemann integrable over a set, then it is Lebesgue integrable, and its Lebesgue integrable is the same as Riemann integral, so वो हम use करेंगे to show that they are orthonormal। अब ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर तुम लोगे e raised to power iota n x, पहले लेते हैं e0 के लिए, तो चलो e0 en किसके बराबर होगा, so that would be integral 0 to 2π, let me see, एक तो आ गया 1/√2π, then I have e raised power iota n x dx, तो अगर n 0 नहीं है, so that would be 1/√2π 0 to 2π, हाँ मुझे यहाँ ये लगाना था बार, है ना, ये और ये बार, so that would be e raised to power minus iota nx, या क्योंकि ये conjugate है, so this is basically cos nx plus iota sin nx का bar dx, which is equal to 1/√2π 0 to 2π, वैसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, doesn't matter, मैं चाहता था ये जरा और needless to say that would be 0, क्योंकि cos का आएगा sin nx by n evaluated from 0 to 2π, फिर आएगा माइनस आयोटा, कहते हैं sin x का आएगा माइनस cos nx divided by n evaluated from 0 to 2π, तो माइनस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं हम, that is 1/√2π n, क्योंकि n 0 नहीं है, n is plus minus 1 plus minus 2 will be, so it will be sine of 2n pi minus sine of 0, तो यहाँ आएगा प्लस आयोटा टाइम्स cos of 2n pi minus cos of 0, तो ये है एक्चुअली 1 minus 1, ये यहाँ पे 0 minus 0, that is indeed 0, right? एक तो ये हो गया, दूसरा अगर अब en em है, nm जो है वो रन करते हैं फ्रॉम +-1 +-2, और अगर ये डिफरेंट है तो ये बन जाएगा 0 to 2π, ऑफ कोर्स 1 नहीं, 0 to 2π 1/√2π e raised to power iota nx 1/√2π e raised to power iota mx का बार, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना करना चाहूंगा, ये बन जाएगा 1/2π 0 to 2π e raised to power iota nx into e raised to power minus iota mx, यही मैं कह रहा था, वो इसका कॉन्जुगेट ये होता है, because it is cos theta minus sin theta, वो है cos theta plus iota sin theta,
So that would be 1 by 2 pi 0 to 2 pi. अगर मैं ऐसे ही करूँ e raised power iota n minus m times x dx तो वो बन जाएगा 1 by 2 pi. इसको इंटीग्रेट करो तो वो बन जाएगा e raised power iota n minus mx divided by internal. So वो होगा iota n minus m evaluated from 0 to 2 pi, चूंकि n अगर m के बराबर नहीं है, क्योंकि वरना ये सही नहीं होगा. So that would be 1 by 2 pi iota n minus m, that would be e raised power iota 2 pi into n minus m minus e raised power iota 0. Of course, e raised power iota, this is an integer, so that would be 0. So anything e raised power iota 2 pi times integer, that would be cos of 2 pi times integer plus iota sine of 2 pi minus integer, so that would be 1, because cos of 2 pi n would be 1, sine of 2 pi n would be 0, will be integer के लिए. So this is basically 1 minus 1, so that is 0. If n is not equal to m, right? So furthermore, अगर n m के बराबर होगा, तो we can easily check. पहले चलो e0 के लिए अगर हम लें, e0 होगा basically 1 by root 2 pi 0 to 2 pi into 1 by root 2 pi dx, which would be 1 by 2 pi into 2 pi would be 0. And if n is not equal to 0, en would be integral 0 to 2 pi into 1 by 2 pi e raised to power iota nx into 1 by root 2 pi e raised to power minus iota nx dx. That's 1 by 2 pi 0 to 2 pi dx. That's equal to 1. If अगर सेम है तो 1 है, अगर डिफरेंट है तो 0 है. So it is indeed an orthonormal sequence. It is an orthonormal sequence in L2. अगर मैं लेता हूँ En को, so अगर मैं लेता हूँ En को इक्वल टू, चलो मैं जरा En at x या En at t जो भी तुम्हें हो पसंद वेरिएबल, तो अगर मैं लेता हूँ 1 by root 2 pi e raised to power iota nx n running from 0 plus minus 1 plus minus 2, तो अगर मैं यहाँ t लिखो या x लिखो, doesn't matter, मैंने t लिया तो t, but that's it. ये जो ये सीक्वेंस है, दिस एक्चुअली मैंने दिखाया ये ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है, लेकिन हमें थोड़ा रिबीग इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ेगी, जो यहाँ पे मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हमें ऐसे ही कुछ ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंसेस के बारे में बात करनी है. सो इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे तो ज्यादा डिटेल में, लेकिन दिस इज एक्चुअली ए कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम या सीक्वेंस. ये सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता. Orthonormal set in L2 0 to, it is a complete orthonormal set. वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा हमें लिमिट इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा अगर हम वहां जाएंगे. Nevertheless, so we यहाँ पे completeness को हम assume करें. Okay, now अगर मैं ये लेता हूँ अपना, अगर ये complete orthonormal set है जो मैं मान रहा हूँ, now if I assume that it's a complete orthonormal set, then I know something जो हमने इस अभी थ्योरम किया. Every f belonging to this L2 0 to pi, I have got an orthonormal set En, जिसको मैंने अभी किया है ऐसे define En at t, that is nothing but 1 by 2 pi square root into e raised to power iota n t. Of course, n runs from 0 plus minus 1 plus minus 2. अगर ये complete orthonormal set है,
then lot of things are true. वो क्या? जो 2-3 चीजें हैं कि if f is orthogonal to En, this whole set, then f must be equal to 0. And every f can be written, f at t can be written actually as summation, क्या होगा? f ei यानी en जो भी है into en, right? Or and of course norm of f square should be equal to summation f en square, है ना? Of course, this is an infinite sum. यहाँ n runs from 0, plus minus 1, plus minus 2, वो सारे values इसमें आ जाएंगे. So ये सभी चीजें true है for this particular orthonormal set. So we would be interested in this. ये तो हमें पता है en क्या है, but how about fen? तो इसको हम लिखें अगर summation cnen, then जो ये cn है इनको हम बोलते हैं Fourier coefficients, because इसको हम बोलते हैं Fourier series. तो ये जो cn है ये है अपना, इनको हम बोलते हैं Fourier coefficients. Can you tell me, अब cn होगा fen और वो होगा 1 by नहीं ऐसे होगा, वो 0 to 2 by f of t, right, into en at t का बार dt. वो होगा 1 by root 2 pi 0 to 2 pi ft e raised power minus iota nt dt for all n running from 0 plus minus 1 plus minus 2. So ये जो Fourier coefficients होंगे वो इसके बराबर हैं. और जिसमें एक चीज काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमने जो बेसिकली इसमें और जो ओरिजिनली हमने